So if you could live anywhere in the world, which place would it be for you? I'm living in the best place right now. India से बाहर नहीं जाऊँगा. Great, lovely. What scares you? Huh? What scares you? Myself. My thoughts are very scary. I actually, when you are writing and you're directing ना, तो you are living so many characters. 8 साल के बच्चे भी हम जी रहे हैं, हम 15 साल की भी जी रहे हैं. You're living an 80-year-old, so you actually tend to write a lot of philosophy. Death scares you. I woke up one day and I was so scary कि आप जो रात को सोच के सोते हो ना, आप वो ही सुबह कभी कभार उसी ड्रीम में ही स्टक हो जाते हो. तो माई थॉट्स स्केयर मी. दैट्स इट. Okay. आई फील आई एम वल्नरेबल. मैं ही हूँ और मैं ही दूसरों के लिए भी. I think we are all that ways, trying to find out our own identities, and fortunate to see that all kind of people, winners as well, are going to have the same kind of fears. But what is success for you? Could you define success for us? I think success is happiness and contentment. मतलब every time you win gold, next time पूरी country खड़ी है, पिछली बार gold आया था, अगली बार भी gold आएगा. Pressure is like monumental. After I think this award that we have received, that's why we have taken almost like 8 महीने हो गए ना फिल्म ਨੂੰ लिख देने. 8 months to write a film that will run for more than 1 hour's time. 1 घंटे को लिखने के लिए 8 महीने चले गए हैं. That is very वो थोड़ा सा ना आपको करता है. अगला ना बस कुछ फ्लॉप ना हो जाए, बस अब वो आप उस पे चल रहे हो. Yeah. No, I can understand. What's the best compliment you've ever gotten? Your inspiration is sitting right in front of you. कॉम्प्लीमेंट तो यही बता देंगे. I don't know. You want a fresh compliment today? I can mention one. I think the best was at the MIF only. हाँ. Post the award ceremony, there was a person who was part of the Oscar committee waiting to meet him, and he appreciated the film and wanted it to take international and more films by him to travel the world. Nice. Thank you for sharing the memory, and this is where I would come to before we kind of move on to the rapid fire question. But yes, your better half is sitting here, and I'm sure you have a lot of inspiration that you might derive because of the subject and the learning that she has. She is a person who has a background in literature. I was going through her profile, and literature in itself, you read so many characters into that one book, and you sometimes live them. How much of your characters that you're drawing, how much of your story, the plot, do you discuss it at home with her, or in some passing ways? Like, I have a habit of remembering one-liners, two-liners, and just like them, using them in the classroom. My students witness that every day. So she's giving you those one-liners, and you're like giving it a thought and thinking about making a film on it. Actually, the beauty is that sometimes we don't get into each other's work. That is also a very clean space, because she has her own thoughts and she has to write almost every day. Yeah. And my job is not to write every day, but carry that thought for a long time. मैं क्या करता हूँ कि एक फिल्म लिख के उसको 2 महीने छोड़ देता हूँ, 3 महीने, and then take a break and then go back to it and still feel कि कहीं मैंने trash तो नहीं लिखा था. If I am still intrigued कि मेरे को ये करना है, then I carry it forward. But before sharing anything with her, I know कि I should have done my homework, because once she reads, she reads it really well. तो वो इनको थोड़ा सा पहला ड्राफ्ट ही जाना चाहिए और फिर बता देना चाहिए पहले कि ये सीन में बदलने को दिया हुआ है हमने, ये सीन भी बदलने को दिया हुआ है. Right. बाकी मोना भी पढ़ती हैं, फिर ये 2 बैठे हैं, फिर ये पढ़ते हैं हर चीज़. Lovely. So I think friends are quite important for you. Then your favorite TV show? सबसे बढ़िया शो अभी तक लगा है वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई है, अगर किसी ने देखा है तो. Yeah, I think. मुझे उसमें फैमिली डायनामिक्स बहुत अपील करते हैं कि न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं फैमिली में और डायनामिक्स कैसे चल रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत कैरेक्टर्स मेरी लाइफ में बहुत रिलेटेबल हैं. Okay. तो हाँ, मेरे डैड तो वैसे ही हैं. तो जी. Nice. And your favorite film that you can watch over and over again?
दिल चाहता है एनी डे हिंदी हिंदी दिल चाहता है। मुझे लगता है कि ये इमोशन जो है ना, ये आपको 20 साल बाद हिट करता है, 15 साल बाद हिट करता है, जब आपके दोस्त, आपका पूरा सब कुछ ही बदल जाता है लाइफ का, फिर आपके दोस्त मिलते हैं, उनकी अपनी लाइफ स्टोरीज चल रही होती हैं, तो यू रिलेटेड मोर। मुझे ज़िंदगी मिले ना दोबारा उसका थोड़ा एक्सटेंशन लगा था, बट नथिंग मैचेस दिल चाहता है। One friend from your graduation years that you still are in touch with? I am in touch with 4 friends, सायक, चंदन, ध्रुव और अंकुर। ये नाम, ये सारे शिवानी मैम के स्टूडेंट्स हैं सारे ही। और 2 चंदन और ध्रुव, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्लास के बाहर अक्सर निकाले जाते थे। Were you ever out of the class? Never. When they were out of the class, they used to knock at my class. 2214 और 217 रूम नंबर है, अगर मुझे नहीं पता वो नंबर अभी भी है, वही है ना। 214 से बाहर निकाले जाते थे और बाहर आके ना ऐसे झांकते थे, और मैं वहाँ लास्ट बेंच पे बैठा होता था, और आप इमेजिन करो मैं ऐसे लेक्चर सुन रहा हूँ। Excuse me, ma'am. May I go to the washroom?